Dear cadets and students, Glory and Hope सेकेंड ईयर के कोर्स का चौथा और आखिरी वीडियो. We dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. We dedicate, हम उनके नाम करते हैं. किन के नाम? This day. हम ये दिन उन लोगों के नाम करते हैं to all the heroes and heroines in this country. इस मुल्क के सारे हीरो, बहादुर मर्द व ख़वातीन, बहादुर हीरोज़, बहादुर मर्द, हीरोइंस, बहादुर ख़वातीन के नाम करते हैं. एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी दुनिया के नाम भी करते हैं. हु सेक्रीफाइस इन मैनी वेज़, जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दी. एंड सरेंडर देयर लाइव्स. सरेंडर का मतलब है शिकस्त तस्लीम करना. इधर सरेंडर का मतलब है कुर्बान कर देना. जिन्होंने कुर्बान की अपनी ज़िंदगियाँ सो दैट वी कुड बी फ्री, ताकि हम आज़ाद हो जाएं. देयर ड्रीम्स हैव बिकम रियलिटी. उनके जो ख्वाब थे वो अब हकीकत बन चुकी हैं. फ्रीडम इज़ देयर रिवार्ड, और आज़ादी उनका इनाम है. We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us as the first president of United, Democratic, non-racial and non-sexist South Africa to lead our country out of the valley of darkness. We are both humbled, हम बहुत आजिज़ हैं, and elevated, और साथ ही साथ हम बहुत फ़ख्र करते हैं by the honor, उस इज़्ज़त के लिए, and privilege. ऑनर एंड प्रिविलेज दोनों का मतलब इज़्ज़त है. दैट यू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, के तुम जो साउथ अफ्रीका के लोग हो, हैव बेस्टोर्ड ऑन अस, जो तुम्हें हमें दे चुके हो. बेस्टोर्ड का मतलब है उस इज़्ज़त देना. जो तुम इज़्ज़त हमें दे चुके हो उसके लिए बहुत ज़्यादा हम मशकूर हैं और फ़ख्र भी महसूस करते हैं. किस तरह की इज़्ज़त दी है? एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल एंड नॉन सेक्सिस्ट साउथ अफ्रीका, कि आप लोगों ने मुझे सदर बनाया यूनाइटेड मुत्तहिदा डेमोक्रेटिक जमहूरी नॉन रेशल नस्ल परस्ती के बग़ैर एंड नॉन सेक्सिस्ट और जिनसी तफरीक के बग़ैर साउथ अफ्रीका का आप लोगों ने मुझे सदर बनाया. टू लीड आवर कंट्री आउट ऑफ द वैली ऑफ डार्कनेस, कि मैं इस मुल्क को अंधेरे की जो वादी है, अंधेरी वादी, उससे मैं आप इस मुल्क को मैं निकालूँ. वी अंडरस्टैंड एट स्टिल दैट देयर इज़ नो ईजी रोड टू फ्रीडम. हम अब भी इस बात को समझते हैं कि आज़ादी को कोई हासिल करना कोई आसान नहीं है. नो ईजी रोड टू फ्रीडम का मतलब है आज़ादी के लिए कोई आसान सड़क नहीं है, लेकिन ये तो लफ्ज़ी माना है. जो कंटेक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि आज़ादी हासिल करना कोई आसान नहीं है. We know it well, हम ये भी बेहतर जानते हैं that none of us acting alone can achieve success, कि हम में से कोई भी अकेले कोई काम करते हुए कामयाबी हासिल नहीं कर सकता. We must, इसीलिए हम सबको therefore act together as united people, हमें मुत्तहिदा, यूनाइटेड पीपल का मतलब है मुत्तहिदा नेशन के तौर पर काम करनी होगी. For national reconciliation, कौमी यकजहती की खातिर. For nation building, कौम की तामीर की खातिर. एंड फॉर द बर्थ ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, और एक नई दुनिया की पैदाइश की खातिर. या इधर पैदाइश का मतलब है बनाने की खातिर, एक नई दुनिया की बनाने की खातिर. लेट देयर बी जस्टिस फॉर ऑल, लेट देयर बी पीस फॉर ऑल. इधर सबको इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए और इधर सबको अमन में रहना चाहिए, या सबको अमन मुहैया होना चाहिए. Let there be work, bread, water and salt for all. इधर सब के पास काम होना चाहिए, ब्रेड रोटी होनी चाहिए, वाटर पानी होना चाहिए, एंड साल्ट और नमक होना चाहिए. Let each know that for each the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves. सबको ये मालूम होना चाहिए कि सबका वजूद, जहन और रूह have been freed, वो आज़ाद हैं to fulfill themselves, कि अपने आप को मुतमईन करें. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. Never, never and never again.
کبھی نہیں، کبھی نہیں اور کبھی نہیں. shall it be that یہ ہوگا، کبھی یہ نہیں ہوگا. that this beautiful land کہ یہ خوبصورت سرزمین will again experience کہ یہ دوبارہ دیکھے گا. that the oppression of one by another ایک دوسرے کی سرکوبی کرنا، oppression سرکوبی کرنا. and suffer the dignity of being the skunk of the world and suffer the indignity of being indignity ذلت، اور دنیا کی وہ ذلت کا باعث نہیں بنے گا. skunk of the world، skunk ایک ایسا جانور ہے جس کے منہ سے جو جاگ نکلتی ہے وہ بہت بدبودار ہوتی ہے. تو یہ افریقہ کا اس نے تشبیہ دی ہے کہ یہ نسلی تعصب کی وجہ سے یہ ایک سکنک بن گیا تھا، یعنی ایک بدبودار جانور بن گیا تھا. تو یہ کبھی بھی اب دوبارہ وہ سکنک نہیں بنے گا، وہ ذلت کی وہ سکنک نہیں بنے گا. انڈیگنیٹی جو ذلت ہے اس کی سکنک یعنی وہ بدبودار چیز نہیں بنے گا، اب وہ نہیں ہوگی ادھر. The sun shall never set on so glorious a human achievement. یہ سورج جو ہے، یہ سورج کبھی بھی انسانی اتنی شاندار انسانی کامیابی پر دوبارہ نہیں ڈوبے گا. یعنی یہ سورج، آزادی کا جو سورج ہے، یہ چمکتا رہے گا. لیٹ فریڈم رین، آزادی کو رہنے دو. گاڈ بلیس افریقہ. افریقہ زندہ باد. Dear cadets and students, with this we came to the end of the 2.2, unit number 2.2, Glory and Hope. Please read it, open your books, read it, try to understand the meaning of different words. If you have any problem, you can discuss it with me, you can contact with me. Subscribe the channel, press the bell icon. And one thing more, I want to tell you that there are words: freedom, emancipation, liberty, and independence. There are four words. Freedom is what? Freedom is a derived noun from free. Free, freed. آزاد ہونا اس سے یہ ایک ناؤن ہے، ڈرائیوڈ ناؤن ہے freedom. ٹھیک ہے. liberty ایک ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے لبرٹی، آزاد. مطلب ایک بندہ آزاد ہو، وہ اپنی آزادی میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایمینسپیشن کا مطلب ہے کوئی ریٹن اور ان ریٹن کوئی قانون ہو جو تعصب پہ بیس ہو یا ظلم پہ بیس ہو، اس سے آزادی حاصل کرنا. جو ریٹن ہوتا ہے وہ تو عام قانون ہوتے ہیں جو کورٹ کچہری میں لوگ دیکھتے ہیں، لڑتے ہیں کیسز. اور ان ریٹن قانون ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں جو زیادہ تر ہمارے روایات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. تو ان روایات سے نکلنا ایک قسم کی ایمینسپیشن ہے. تو ایمینسپیشن اس آزادی کو کہتے ہیں کہ آپ ایگزسٹنگ لا، whether that law is written or unwritten، اس سے you get freedom. So you see that emancipation, when you achieve it, so it is freedom. ٹھیک ہے. انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ڈیپینڈ کر رہے تھے کسی سے. Now you got independence. اب تم اس سے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہو، آزاد ہو گئے، اس پہ انحصار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لبرٹی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پرسنل کیپیسٹی میں آپ آزاد ہیں. تو یہ مختلف میننگ ہے اس کی، آپ اس پہ سوچیں. کوئی بھی قسم کی وہ ہیں queries ہیں تو you please feel free to ask me. You can contact me. You can even write in comments. Please like the videos, share them. Once again, please, the second year students, you still didn't subscribe it. Please subscribe it. They are for your benefit. I thank you all.